delete those people entirely from your life. Like मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, जीवित है. It does not matter who to me. I'll just completely cut them off from this life. ठीक है? You need to switch that image in your mind. Don't kind of feel trapped in this situation कि यार कोई नहीं है, बार बार आसपास तंग करेंगे लोग, that kind of thing, right? तू physically proximity में बहुत ज़्यादा दूर है उनसे. Yo guys, namaskaram. So, Debukidastak is a platform where we talk on mental health and a lot of other sensitive issues, right? So basically, the entire aim of this channel is to build a community around sensitive issues and make people feel comfortable about themselves. So basically, if you're new here, consider subscribing. Our mission is to empower you with ideas to live smartly and joyfully. The world is full of suffering, but let us increase our competence to deal with things joyfully. And just a tip, so all these are basically conversations, so I might suggest that you should watch these conversations at 1.5x. You can increase the playback speed through the button in the settings. Cheers and enjoy watching. Yo guys, namaskaram. So मेरे पास एक problem आई थी recently that there's this guy specifically and he was bullied in his past and अभी भी he's not able to, let's say, kind of do anything worthwhile, और let's say like उसे डर रहता है कि अगर मैं कुछ अभी भी अच्छा करूँगा, those people from my past would come and haunt me. ठीक है? So first of all, I would just like to kind of give you some perspectives which can help you move in some direction. ठीक है? So सबसे पहली चीज़, I think एक reason और let's say a sense in which that feeling is triggered is because तूने उन लोगों को कहीं अपने साथ ऐड कर रखा है. लाइक कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से तेरे को रोज उनका एक्सेस दिखता है. आई थिंक इट कुड बी एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर दैट मैटर, और लेट्स से बहुत पास प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं. ठीक है? सो इंसान, मतलब अगर किसी को आदत है लेट्स से बुली करने की, एंड अब आप मिलते भी हो, राइट? लाइक किसी को पसंद नहीं होता लाइक अब वो इंसान को देखना जो उसे तंग करता है बहुत ज़्यादा, लाइक ही बुलीज देम इन अ सर्टेन वे. So I think first of all, the first thing that you should do is like just cut off any visible communication which you might be having with those people. Just kind of delete those people entirely from your life. Like मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, जीवित है. It does not matter who to me. I'll just completely cut them off from this life. ठीक है? Like उसके बाद आई थिंक द सेकेंड स्टेप और लेट्स से द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग ए प्रॉब्लम कम्स, बिकॉज उन्हें देख देख के अगर बार 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 तो ट्रिगर होता रहेगा तब तो आप अपनी लगाओगे ही लगाओगे. ठीक है? सो आई थिंक फंडामेंटली स्पीकिंग, इट्स अ इट्स अ हार्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइक दैट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस इन योर स्पेसिफिक माइंड विच इज मेकिंग यू सफर. ठीक है? तू उन स्पेसिफिक चीज़ों को एक ही लाइन ऑफ थिंकिंग से इंटरप्रेट किए जा रहे हैं जिससे तू अपनी मारे जा रहा है बार बार. सो आई थिंक अ फंडामेंटल थिंग दैट नीड्स टू हैपन इज दैट यू नीड टू स्विच दैट इमेज इन योर माइंड. लाइक अपनी इंटरप्रिटेशन जो तेरी थॉट्स की वो बदल रहा है. ठीक है? सो आई जस्ट लाइक टू गिव यू certain concepts here about like this setting up of your intention and then exceeding in your expectations per se. So what this basically means, let's say if you want to do something good, or let's say just start something वैल्यूबल इन लाइफ. ठीक है? सबसे पहले एक इंटेंशन सेट कर एंड लाइक अपने वाई को डीपन करते रहे कि यार ये करना ही करना है. एंड लाइक it can be used as a negative reinforcement that you're remembering their faces, and like a certain sense of ego or a certain sense of hurt is motivating you to let's say at least start that bloody thing. ठीक है? So I think fundamentally speaking, I would just like to take this example of Mike Tyson. Like वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, like इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन. चाहे जितनी भी गलतियां करे इंसान, वो बार बार खड़ा होकर उठ रहा है अपने ड्रीम्स के लिए, एंड लाइक ही हैज दिस नेवर गिविंग अप स्पिरिट. ठीक है? सो आई वुड लाइक टू से दैट लाइक डोंट काइंड ऑफ फील ट्रैप्ड इन दिस सिचुएशन कि यार कोई नहीं है, बार बार आसपास तंग करेंगे लोग, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट? तू फिजिकली प्रॉक्सिमिटी में बहुत ज़्यादा दूर है उनसे, एंड यू आर फ्री इन लाइफ. लाइक यू आर नॉट trapped in that specific situation forever. It was a thing that happened to you in your past per se. ठीक है? अब तू क्या किए जा रहा है, क्योंकि तू अपने कंपल्सिव थॉट्स बार 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 रन किए जा रहा है, विच इज क्रिएटिंग अ पर्सनल रियलिटी इन योर लाइफ कि मैं इस टर्मोइल से कभी निकल ही नहीं सकता. ठीक है?
You have forged a permanent identification with your past because they give you a sense of being, a sense of identity. तेरे को लगता है, "ओ यार, जैसा मैं पहले था मैं वैसा ही हूँ," क्योंकि अभी इस मोमेंट में यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ टू प्रूव योर सेल्फ कि लाइक आई कैन बी गुड, आई कैन बी बेटर, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस का भी बिल्डअप नहीं हुआ. लेट्स से अगर तू बचपन में भी कुछ करना चाहता होगा, कॉन्फिडेंस वो शायद मार दिया होगा, वो कॉन्फिडेंस स्पेसिफिकली ईदर बाय दोस बुलीज पर से, और लेट्स से कोई ऐसी वॉइस आउटलेट नहीं मिला होगा जहाँ पे लेकिन यू कैन गो टू योर टीचर्स पर से. ठीक है, सो आई थिंक दैट्स फाइन. Presuming your age, I'm hoping that you're not very old, like 60 70 years के नहीं, और कि like ठीक है आप कुछ बचा नहीं. ठीक है, life is long. Even if you're like let's say 25 or 30, you still have entire 70 to 80 years ahead of your life. It just takes 1 year to change your life completely. ठीक है, so I think fundamentally, like when you're just starting out on that journey, like never kind of doubt yourself. ठीक है, one more thing would be that like you pick up any physical activity ताकि तू अपने माइंड में वो कॉन्फिडेंस ला पाए कि अगर वो आ रहा है मेरे को मारने या लेट्स से कुछ हो रहा है, अपने ही माइंड में या जस्ट गिविंग योरसेल्फ अ रीअश्योरेंस. ठीक है, आई कैन फाइट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट यू हैव दिस सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन यू कि नो मैटर हु द हिल कम्स, आई विल फाइट देम इफ दे वांट टू फाइट बैक एट मी. ज़रूरी नहीं कि आप मुक्के घुसे चला रहे हो, बट you should have that capability. ठीक है, इससे क्या होगा कि you will kind of start gaining a subtle sense of confidence and you'll not be fearful of let's say similar type of people which may come into your future. ठीक है, specifically speaking. So I might say that like sometimes life brings a very dark phase, but there's this quote from Dastak wherein he says that those who suffer the most in life become the happiest. ठीक है, so like don't lose hope. Do not let a temporary event, or let's say a temporary emotion which is induced in that, which was induced by that event in your life, make permanent decision in your life which would have long term impact. ठीक है, even if your life seems dark now, like जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर ही वैसे रहेगी. ठीक है, like don't take any long term decisions per se which might impact you due to this short term wali pain. ठीक है, so I might say like always say जितना दुख दर्द हो रहा हो अभी, prioritize like your long term health, long term mental health, long term gains, like long term goals per se over your short term pain. Like focus on just winning daily, day in and day out, and ऑलवेज एम फॉर अ लॉन्ग टर्म स्पेसिफिकली कि ठीक है ज़रूरी नहीं कि मैं ज़िंदगी भर इसी जगह इसी कोने में फंसे रहूँगा. इफ़ आई वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ और जस्ट लेट्स से टेक एक्टिव स्टेप्स इन लाइफ टूवर्ड्स गोइंग इन अ फंडामेंटल डायरेक्शन, within like 6 to 8 months you'll be out of that bloody place, and like it would not induce those feelings of stress, anxiety. Okay, I think one more thing might be that you experiment also, like take some professional help, like some go to a professional counselor of sorts which can deeply listen to your traumas and you can be you. Like you need a place at this point of time wherein you can be just be the real self that you are in front of a non-judgmental person. Okay, so yeah, let me know what you feel about it, and I know this is a small video, it might just give you some perspective, but yeah, let me know if it helps you. And this is Debashish from debukidastak signing off. Just a couple of updates. So my website is live now, so you can go to www.debukidastak.com. There you'll find a lot of resources. I have my blog running there. I have my reading list for the years. If you have any suggestions, comments, I'll be happy to take that feedback in and improve, because I just want to build a community which is hell smart and just always living in the world of ideas and making things happen.